This call is now being recorded. Yes, students. So very good morning to all of you. So today we are going to have start this alternating current. Already I told you the introduction of alternating current. Before that, we had gone through electromagnetic induction, and in this alternating current, let us recap some of the points which we have uh, discussed in our earlier session with the help of the wonderful PPTs made by our earlier DC of Kendriya Vidyalaya Sangathan, Honorable Mani sir. So, with the help of those PPTs, I will just have a recap of what we did earlier. So, already I told you that what is alternating EMF, the EMF which is continuously changing its magnitude but reversing its direction periodically, as we have made that that EMF or alternating current in our in earlier class, 10th class में आपने generator में देखा होगा. In that we have produced this alternating current, or that's why that was called as AC generator, alternating current generator, है ना. तो इस तरह से alternating current का है, जैसे EMF का है. Alternating current is that current which continuously changes its magnitude and periodically reverses its direction. So the nature of this current and EMF is such that we can express it graphically, or with the help of our very nice two waves which we are aware of, that sine wave and cosine wave. So we will just represent it with the help of this. So if we take the angle over the x-axis, and then this EMF or alternating current on the y-axis, then we can easily see that this EMF and current, so as it changes continuously and alternating, it is changing also, direction भी change हो रहा है इसका. तो हम देख रहे हैं कि it is going like this, maximum value, it is going up to its peak and then slowly coming down zero, and then it is changing its direction. So after a definite period of time. So on this x-axis you can see we have shown this x-axis through the angle also, and through time period also. So you can see after a definite time, how much time? T by 2. Time period is T, capital T. Then after every T by 2, it is reversing its direction. So after T by 2, it has changed its direction. Then again after T, it is changing its direction. So after every T by 2 time, means the half the time period, it is alternating its direction also. Now this has happened with the EMF. The same thing is happening with the so how we can represent it? E is equal to E naught sine omega t, where E naught is the peak value of this. So this way we can easily represent. The same thing we can do for the current also. The peak value of current also I naught, and if they are in the same phase, we have studied that same phase in that class 11th also. So both are in same phase. So if in that case it is showing this way, okay. So that way we can show. Now it is in the same phase we are showing, but it will not be always in the same phase in all the circuits. That we will study afterwards. So which type of circuits, in which circuits the current and EMF are in same phase, and how that phase is changing as our circuit, the whatever devices we are connecting, that is changing. Then डेफिनेटली एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे नहीं आएंगे करंट और ईएमएफ, वो बाद में देखेंगे. लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसा देख रहे हैं कि करंट और ईएमएफ सेम फेज में है, राइट. तो करंट को भी वैसे ही इक्वेशन से हम दिखा सकते हैं. सो वी कैन शो इट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. So this way it is that, but that is not the only thing. We can represent the same thing by using the cosine also, that we have done in our waves and oscillation chapter in last year 11th में हमने किया है. वहां पर भी हमने waves and oscillation को जैसी आवश्यकता हो वैसे हमने उसको इस्तेमाल किया, कभी cosine wave कभी sine wave, because the nature of that जिस तरह से alternating का है या magnitude change होने का, वो वही होगा. तो
कभी हम पीक से शुरू कर रहे हैं तो हम कोसाइन हमें लेना ठीक है, लेकिन हम अगर जीरो से शुरू कर रहे हैं ई नॉट और मतलब ई और आई, तो हमें ये साइन वेव सही पड़ती है समझाने के लिए. सो अदरवाइज देयर इज नो difference about it. No? So that way all these things are there, and in this equation we have this E and I are the instantaneous value, means at that particular time, and at this pi by 2 what is the value, at pi what is the value, at this time, in case of time we say t by 4 पर कितनी value है, even pi by 2 और pi के बीच में है ना 3 pi by 4 है, तो वहां पर कितनी वैल्यू वो भी हम एग्जैक्टली बता सकते हैं थ्रू दिस. सो दैट E is the on y-axis we can exactly represent, or we can find out exactly the value of what the EMF, instantaneous EMF at a particular 3 by 4 pi time के ऊपर क्या है, या सॉरी एंगल पर है, या t by 4 और t by 2 के बीच का जो टाइम है उसमें किसी भी समय पर कितना है, वो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच करके और यहाँ पर यहाँ रिप्रेजेंट करके हम दिखा सकते हैं. And obviously this E naught and I naught are the peak values or amplitude of EMF and current we are saying, and here we have shown I naught is slightly smaller than E naught, because by that our formula I naught is equal to E naught by R. So if that resistance is there, so due to that we have just represented it I naught is slightly smaller than E naught. Okay, तो ये हम लोगों ने ऐसे शो कर दिया. एंड यू नो दैट ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम, एंड ओमेगा टी इज द फेज है ना, दैट वी नो ऑल. सो एंड एज वी शो दैट डीसी विद दैट two parallel plates and slightly smaller plate like that. So here as AC source nature ही ऐसा है, alternating है, तो इसलिए इसको हम symbolically जो सर्किट में दिखाएंगे वो इस तरह से वेव सिंबल से दिखाते हैं. So I hope it is clear to all of you. यहाँ तक हमने आपसे बात कर ली थी. So I have just recapped it for some time. Now we will see the average or mean value of alternating current. Though this, as you can see, this is increasing, decreasing. So it is not always same. As DC was always same, so there was no need of finding the average value of DC or average value of DC current or EMF. But here, as this AC is gradually increasing, it is reaching to the peak, then going slowly down zero, and then it is alternating. So definitely we will have to find out the average. जैसे हमारे होता है ना 11th में आपने किया कि अगर कोई मोटर व्हीकल जा रही है और उसकी स्पीड एक जैसी नहीं है, जनरली डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो स्पीड कभी भी सेम नहीं रहती है. थोड़ी सी इंक्रीज हुई, फिर कहीं सिग्नल आ गया, रुक भी गई, फिर थोड़ा सा रफ सर्फ रोड है तो थोड़ा सा कम हो गई, रश है तो कम हो गई, फिर स्मूथ रोड है बिल्कुल सही. तो हम यहाँ से पूना तक जा रहे हैं, तो we will not be more concerned with what was the instantaneous speed, but we would be concerned that in that journey of 200 kilometer, in how much time we have completed that whole journey. So total distance is 200 and total time is taken suppose 4 hours. So 50 is the average speed हमारा आ जाता है. सेम वे यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट का भी ऐसे ही करना है. तो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC we will find out. So let us move on to find out the AC. और वो हम कैसे निकालेंगे, हमारा इंटीग्रेशन हम जानते हैं, उसके आधार पर हम निकालेंगे AC या ऑल्टरनेटिंग करंट. तो पहले तो हम ये समझते हैं कि उसको डिफाइन कैसे किया गया है. तो पहले हम AC को उसी आधार पर डिफाइन करते हैं. तो जस्ट इसको याद रखिएगा, इट इज डेफिनेशन गिवन टू जस्ट फाइंड आउट दैट AC. सो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल, है ना, ओवर हाफ साइकिल. पहले हाफ साइकिल की बात करें. पहले चलो हाफ साइकिल की मैं बात ही नहीं करता हूं, पहले मैं आ रहा हूं आपके फुल साइकिल पर. फुल साइकिल ऑफ AC क्या होता है. तो फुल साइकिल ऑफ AC हमारा क्या होता है हम लोग देखते हैं. चलिए, तो जस्ट फॉर दैट आई विल हैव टू एंड दिस शो एंड आई विल हैव टू मूव ऑन टू टेक आउट द. यस बोलिए सर. जो आपने इक्वेशन निकाली सर, I = I naught cos ओमेगा t, सर उसका यूनिट क्या होगा. हाँ, जो भी यूनिट है, करंट का यूनिट हमारा क्या होता है, एम्पियर. तो I naught का भी यूनिट एम्पियर ही होना है और I का भी यूनिट एम्पियर ही होना है. तो एम्पियर में ही सब कुछ होगा, है ना. जब हम कोई बात नहीं कर रहे हैं तो वो एम्पियर ही है.
मिली एम्पियर, हाँ अब डेफिनेटली बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगी जो कि तो हम माइक्रो एमीटर से उसको मेजर करेंगे, और थोड़ी सी ज्यादा होगी तो मिली एमीटर में मेजर करेंगे, बट द SI यूनिट इज ऑलवेज व्हाट आवर दिस एम्पियर, राइट। तो ये हमारा है। अब हम देखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल, वहां पर फिर हम हाफ साइकिल पर आएंगे, पहले एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट साइकिल देखते हैं। तो एवरेज एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो ये बताइए, आपसे कॉमन सेंस से बात कर रहे हैं हम, ये देखो ये ऐसे जा रहा है, अब ये यहाँ पर टाइम हो या यहाँ थीटा हो, नथिंग, इट डजंट मैटर, एंड AC की हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ E से मान लो दिखा दिया हमने EMF, अब ये E बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये पूरा साइकिल अभी जाएगा ना, ये ऐसे बढ़ा फिर कम हो गया, I may not be able to reach the same peak here, so you understand please, okay, yeah. So this is E naught and this is also minus E naught हो जाएगा, okay. So what you can say about the average value of AC over a complete cycle, है ना? What can you say about the average value? This is definitely time period T by 2 and this is time period T, okay. So this way it is, suppose. So what can you say about the average value? अगर यहाँ से मैं यहाँ तक लेता हूँ एवरेज वैल्यू उसकी लेता हूँ ओवर कंप्लीट साइकिल, तो एवरेज वैल्यू कितना आना चाहिए? E by 2 आना चाहिए। वैसे तो एवरेज वैल्यू कितना आना चाहिए? E by 2 या कुछ तो भी, है ना, half of E, 1/4 of E. What you feel that what it should come? What it should come? Average value. 0, वेरी गुड, है ना, 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर जिस तरह सिमेट्रिकल बिहेव है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर पीक वैल्यू उसकी पहुंचा, अगर मान लीजिए 3 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी -3 होगा। यहाँ पर फॉर एवरी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ओवर दिस हाफ साइकिल देयर विल बी अ नेगेटिव कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन दिस नेगेटिव हाफ साइकिल, सो ऑटोमेटिकली इट विल कैंसल आउट। इसके लिए ये -3 है, यहाँ पर ये हो गया 2 हो गया, तो इसके लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग -1। सो ऑल इफ यू ऐड टुगेदर इन कंटिन्यूअस फॉर्म आल्सो इट इज गोइंग टू गिव द 0 only. So the average value of AC over a complete cycle is 0, no doubt about it, na? So by common sense also we can understand it, but now if you because वैसे तो आपको अभी derivation वगैरह नहीं आने वाला है because you are on the MCQ phase, but you should understand for doing some numericals or something you should know that how it comes mathematically. So जल्दी से हम लोग वो निकाल लेते हैं, mathematically also we will prove that yes it is 0, because in the second term you are going to face this descriptive also. For that also we should understand. So let us start for that, है ना, to find out that value. तो चलिए I is equal to I naught sin omega t से हम शुरू करते हैं. So I have taken I is equal to I naught sin omega t as equation 1. So this we assuming that small time interval मान लीजिए dt है, we have taken a small time interval dt where that current is constant. For very small time interval तो हम current constant मान सकते हैं, और a very large period या थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो current, but at particular time तो current एक constant होगा ना, तो वो current हम मान लेते हैं I है, right? और उस समय जो हमारा चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हुआ है वो मान लीजिए dq है, so dq is the charge at that time. तो उस केस में हम I dt और dq में रिलेशन आप लोग को मालूम ही है बच्चों, as you know that I is equal to dq upon dt, so that all you know. So from that we can get dq is equal to I dt, so that is very sure, you can write in this way. And if we want to do this dq, तो अब ये dq जो है चार्ज है हमारा, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा हमारा, और टोटल चार्ज अगर आ जाता है और हमें टोटल टाइम मिल जाता है, तो हम टोटल जो करंट है पूरे इसमें
कितना वो हम निकाल सकते हैं, या टोटल हमारा करंट निकाल सकते हैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल, या टोटल ईएमएफ निकाल सकते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए। तो हम किस तरह से अप्रोच करेंगे इसकी तरफ, थोड़े से चार्ज निकालेंगे और उसको हम टोटल चार्ज हम निकालेंगे पूरा ओवर अ कंप्लीट साइकिल, और टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है कंप्लीट साइकिल का बताइए, व्हाट इज द टोटल टाइम? ये dt स्मॉल टाइम, यस, कैपिटल व्हिच स्मॉल टी और कैपिटल टी? सर कैपिटल टी। Capital T. So for a complete cycle, the time is capital T. For a complete cycle, the total charge is Q. So वो हम अभी निकालते हैं। तो for that we know we have that हमारे पास शस्त्र, हमारे फिजिक्स को हेल्प करने के लिए हमेशा हमारे पास कौन है? मैथमेटिक्स है। तो वो मैथमेटिक्स हम लगाते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, क्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए? यू ओनली टेल मी। dq I have integral. So integrate it. Those who can, you do there only. So integrating from where to where? Where to where? In right hand side? सर t to 0. Yeah. From where to where? 0 to t. 0 to Zero t. to यहाँ right side में यहाँ पर dt है, तो we have to go from 0 to t. So just write one line that integrating this equation 3 from 0 to t, right? So that way you can do. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा। चलिए अब ये इंटीग्रेशन तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुतों को आता है, लेकिन नहीं भी अच्छा नहीं भी आता है तो हम लोग इसको अभी मैं थोड़ा सा आपको ये कर देता हूँ। चलिए ये हमारा हो गया है आई। यहाँ पर भी हम i की जगह पर क्या रखेंगे? i की जगह पर पहले रख दीजिए, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। सो डेफिनेटली यू राइट यूजिंग 1 and 3। i की जगह पर भी हम i नॉट साइन ओमेगा टी रख देंगे, राइट? सो ये हो गया 0 to t and i नॉट साइन omega t dt, right? So now I naught is the constant value, I naught is the peak value, so that is not that cannot be integrated or differentiated, that is a fixed value. So just to take it out, I naught. So now 0 to t sine omega t dt. So what should be there? Some of you, if you know the integration of sine, minus you can, cos omega t. yeah, Minus cos omega t. Yeah, cos minus cos omega t. Very good. Minus cos omega t. But at the same time, this omega t we have to integrate, differentiate, है ना? So वो हो जाएगा ओमेगा और उसको हम डिवाइड करते हैं as you know. So ये हमारा हो गया and ये 0 to t. So just you can take it this way. चलिए निकाल लीजिए इसको, ओमेगा को भी बाहर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So q is equal to I naught. ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है अगर t के फॉर्म में देखें तो you can substitute that value also over here. So better you substitute, है ना, 2 pi by t. 2 pi by t. Omega is equal to angular frequency, no? So angle upon time, angle upon total time. Total angle is 2 pi radian, ऐसा घूम रहा है, और total time उसमें कितना रखना है? t. तो ये ओमेगा की जगह मैंने क्या रख दिया है मैंने, और माइनस का साइन भी मैं बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, cos ओमेगा की जगह मैं 2 pi ले रहा हूँ और ये t ले लिया। So 0 to t. So just you just substitute the values now. So what you get, what you got it? Tell me. So q is equal to minus I naught into t upon 2 pi. And what here it is. So if I write t over here, so it will be cos 2 pi into what? T by t minus cos 2 pi upon t into 0. So what it will give you? Tell me. It will give you Sir, q is nothing equal but to 0. Yeah, cos 2 pi minus cos 0. So cos 2 pi is also, I think, what? 1, and cos 0 is also 1. So ultimately you are going to get 1 minus 1, that is 0. So this charge the आपका क्या आ गया? Charge itself is 0. So that's why the average value or the mean value of AC current over a average value, or I mean over a complete cycle, is nothing but Q is 0. So 0 by T, that is nothing but
So this way we can say that in a one sentence that the average value of AC है ना over a complete cycle is 0. तो ये हम पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए इस तरह से हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको मैथमेटिकली भी करा दिया। तो ये आपको इसलिए कराया मैंने कि सो दैट यू कैन just have such practice of this computation, calculation small, because that will be important for you in doing the numericals, though it is not coming directly for the examination derivation. चलिए अब तो ये ओवर अ कंप्लीट साइकिल तो हमारा AC 0 होता है, क्लियर हो गया है ना, बाय कॉमन सेंस भी हो गया और बाय मैथमेटिक्स भी हो गया, है ना। तो देखिए फिजिक्स हमें इस तरह से क्रॉस चेक करने का भी हमें पूरा मौका देती है, एंड वी क्रॉस चेक एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सम थिंग्स वी आर दे आर बियॉन्ड कैलकुलेशन, बट बाय हाइपोथेसिस चलता है ना। बट मेनी ऑफ द थिंग्स वी डू बोथ वे। So that is the beauty of our physics. So now we are coming to that average or mean value of alternating current over half cycle, because over complete cycle में तो zero हो रहा है, लेकिन we are very much concerned here the average value or mean value over a half cycle, क्योंकि half cycle में तो zero नहीं होगा। ये बात पक्की है कि नहीं बच्चों? पक्की है ना? पक्की है कि नहीं? हाफ साइकिल में तो जीरो होना ही नहीं है। तो हाफ साइकिल में कितना हो सकता है ये हम देखते हैं जरा। हाफ साइकिल में कितना हो सकता है ये बताइए। अगर फुल साइकिल में मान लीजिए ये हाफ साइकिल हुआ है, राइट, आई एम टेकिंग इट सपोज आई नॉट ये हाफ साइकिल में हुआ। हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो गई, है ना। तो इसका एवरेज, हाफ साइकिल का एवरेज कितना होगा? आई नॉट से डेफिनेटली क्या होगा? कम ही होगा या ज्यादा होगा या जीरो होगा? एवरेज वैल्यू ऑफ दिस आई नॉट या ई नॉट, आई या ई, आई नॉट का नहीं, आई या ई का जो एवरेज वैल्यू होगा ओवर हाफ साइकिल वो कितना होगा? एग्जैक्टली हाफ होगा या क्या हो सकता है? आप जस्ट आई एम आस्किंग जस्ट टू थोड़ा सा आपको सोचने के लिए, क्रिटिकली और क्या बोलते हैं, क्रिएटिवली थिंकिंग करने के लिए आई एम आस्किंग सच क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। सर ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो सकता है ये एवरेज वैल्यू? फुल साइकिल। फुल साइकिल से तो ज्यादा होगा डेफिनेटली। आई एम आस्किंग अबाउट दिस आई नॉट ये पीक वैल्यू है इसका। तो पीक वैल्यू से एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल ज्यादा होगा या कम होगा? और कम होगा तो कितना कम होगा? आई नॉट का आधा होगा या आई नॉट जितना होगा या आई नॉट का 1/4 होगा? क्या हो सकता है? जस्ट फॉर अ रफ आइडिया वी आर डूइंग गोइंग फॉर दैट। चलिए मैं एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं। ये 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ये पीक वैल्यू ये है, लोएस्ट वैल्यू ये है। लोएस्ट वैल्यू चलो 0 भी हो सकता है किसी भी चीज का। तो 0, 3, 4, 5, 7 पीक वैल्यू, जैसे ये आई नॉट है ये। अब ये बताइए इनका एवरेज निकालेंगे तो वो 7 से ज्यादा होगा या कम होगा? सेवन पे गए, फिर अपन 4 पे आ गए, फिर 3 पे आ गए, फिर 2 पे आ गए, फिर 1 पे आ गए, 0 आ गए, माइनस में नहीं गए हैं। जीरो, 3, 7, 3, 0, चलो ये 5 ही वैल्यू ले ली मैंने, बीच वाली छोड़ दी है। अब इनका एवरेज निकालता हूं तो ये एवरेज, ये 7 जो है आई नॉट या मैक्सिमम वैल्यू है इसकी करंट की। चलो ये करंट की 5 वैल्यू मैंने ले ली, है ना। 0 से शुरू हुआ, 3, 7, 3, 0। तो अब इनका एवरेज कितना आता है? बेटा एवरेज निकालना आता है ना अपने को। 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दिया, इनको सबको ऐड कर दिया हमने, 2.6 है ना। तो 7, 3, 10, 13,
13 अपॉन व्हाट 5 है ना, समथिंग कितना आ गया, समथिंग 2.6 पॉइंट समथिंग आ गया ना। तो ये इस तरह से, तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ, आपसे आंसर नहीं आ रहा था इसलिए मुझे इस पर जाना पड़ा। तो डेफिनेटली आई नॉट से क्या होगी ये वैल्यू, कम होगी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल विल बी डेफिनेटली smaller than that I naught and definitely greater than the zero value. So it will be somewhere. लेकिन exactly क्या होगी वो हम देखते हैं, we will find out it, है ना। And that we have found by defining this defining this average value or alternating value, है ना, average value of alternating current, उसको हमने define करके हम उसके आधार पर आगे बढ़े हैं। तो वो हम बात करते हैं अभी। चलिए 10 मिनट में हम लोग ये बात करके कंप्लीट करेंगे, 5 मिनट में। सो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज दैट स्टेडी करंट, उस स्टेडी करंट के बराबर है, क्योंकि हमें इसको निकालना है तो वी आर कंपेयरिंग इट विद द स्टेडी करंट। सो द mean value of AC over half cycle is that steady current which sends the same amount of charge के बेसिस पर हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उतना ही चार्ज वो प्रोवाइड कर रहा है सर्किट में इन द सेम हाफ साइकिल एज इज सेंड बाय द गिवन अल्टरनेटिव करंट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल वो उस स्टेडी करंट के बराबर है जो कि उतना ही चार्ज से सेंड करती है हाफ साइकिल में जितना कि एसी करेगा। तो ये चार्ज के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू को डिफाइन किया है। अब इस आधार पर डिफाइन किया है तो निकाल भी लेते हैं उसी आधार पर। तो वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हमने किसका निकाला था अभी, कंप्लीट उसका निकाला था, है ना। तो यही हम चार्ज के बेसिस पर ही लिया है, देखो चार्ज ही निकाला हमने। तो यहाँ पर केवल चेंज क्या करना है हमको, वहां पर हमने क्या लिया था, हमने लिया था t इज इक्वल टू टी, कैपिटल टी लिया था, टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी लिया था। बट हियर इट इज अ हाफ साइकिल, सो वी हैव डन व्हाट, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वही लिया, लेकिन यहाँ पर t/2 ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई, केवल हाफ साइकिल के बेस पर है इसलिए हमने क्या ले लिया, t/2 ले लिया। सो इफ t/2 हम लेते हैं और इसको जैसे आपने अभी इंटीग्रेट किया, सो 0 to t/2 अगर हम करेंगे और वैसे के वैसे चलना है, आई नॉट को हम बाहर ले लेंगे बिकॉज ये कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे जैसा कि आप लोगों ने किया था, वैसे पहले किया था ना, तो आई नॉट इंटू क्या हो जाएगा ये माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर केवल लिमिट चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट दिस वे। हाँ, ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं, अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू इन्होंने नहीं रखा है, अगर रख देते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो दैट ओनली इज द चेंज। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, टू ये 2 से कैंसिल हो गया, सो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस। Okay, you need not to fully do this, all you can do also, those who are math students, but non-math also students also should try again with that the same way. Okay, so ये आप इतना आ जाएगा आपका ये रिजल्ट। तो ये अगर रिजल्ट आ जाता है हमारा, तो ये हमारा नंबर, मान लो मैंने 2 दे दिया इसको, ये हमारा नंबर 1 था तो ये 2 ले लिया। बट मीन वैल्यू ऑफ एसी, वही फॉर्मूला है हमारा, मीन वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ओवर हियर, दिस इज आई नॉट टी बाई पाई, and what is the time we have taken, there we have taken total time t, capital T over a complete cycle, here it is t/2, so you substitute, इसको नंबर 3 ले लीजिए। so if you use number 2 and number 3 you will get the mean value or average value of AC। so Q की वैल्यू आपने रख दिया I नॉट t by pi, और यहाँ पर ये t/2 है। so if this t, if you change it, this will be cancelled, so what you will get, tell me what has happened? Sir, 2 upon pi I naught. Yes, 2 by pi, something has started। okay, so हाँ, अगर इसको आप करेंगे तो 2 I naught by pi, it will come 2 I naught by pi, right? Very good। so this way you can understand,
I think it's laser has started. I want pencil पे आना चाह रहा हूँ. So what it will come, I naught is equal to I m is equal to, this will be 2 I naught by pi. So if you further simplify it, what you will get, 2 pi, 22 by 7 अगर आप करते हैं तो you will if you simplify it you will get this way. So 2 I naught by pi, or if you substitute the value of pi you can get it as 22 by 7 है ना, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो 14 by 22 है ना 22 by 7, yeah, 14 by 22 or 7 by 11 I naught. So 7 by 11 I naught बोल दीजिए, या 7 by 11 आप करेंगे तो you will get 0.637 I naught. Am I correct? So this way you can 11 6 66, right? So it will come 0.637 if you go up to the third place of decimal. And the same thing, how much value it has come? It has come what I naught ka 63.7%. If you convert into percentage you will get that yes, it is not exactly half it is coming, but it is coming how much, the 63.7% of I naught. तो ये हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग AC is this much. And as the EMF is also in phase with this current, so अगर हम EMF का भी इसी तरह से अगर निकालेंगे तो वह भी इतना ही हमें मिलेगा. जो एवरेज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है उसका वो कितना मिलेगा, 63.7% हमें मिलेगा. Okay, so ये बात क्लियर है. As I told you, the average or mean value of alternating current is 0 over a complete cycle, because the positive and negative values get cancelled, because exactly same number of positive values and exactly here the same number of negative values will be there. So that way you can understand this concept very well, I think. So it is very much clear to all of you, this concept. So that way we are thankful to you. So let me